सो अगर इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी में बड़ा करना है, वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छा मार्क छोड़ना है, तो आर वी प्रिपेयर्ड टू डू दैट? डू वी हैव इनफ न्यूक्लियर प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट? This is a challenge. So, in terms of knowledge, we have, Mhm, but in terms of expansion, it, for example, now we are operating at, let's say, 8 gigawatt, for example. mhm, Okay, we have a target of 100 gigawatt for 2047. mhm, Current under construction plants को अगर हम देखें तो we are achieving, let's say, 32 gigawatt in, let's say, timeline of 10 years. Okay, so this is ambitious, but it's not impossible. But there are challenges which we need to actually address, and one is what you have rightly mentioned: the technical resources. See, the current infrastructure what we have in place, it trains people for the existing applications or plan we have, ठीक which है. is 8 gigawatts, let's say 33 gigawatts. Now we are going ahead to 100. At least three times more you need it. We don't have that current capacity. First, दूसरी चीज, there is a difference in working in a normal environment and a nuclear industry. Why? You need to understand. मैकेनिकल इंजीनियर है, सेम मैकेनिकल इंजीनियर है, अगर वो नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है, उसके लिए अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है एंड यू सीट कि इस पे बहुत स्ट्रांग लोड आने वाला है, तो व्हाट ही विल डू, ही विल मेक अ सॉलिड ऑफ दिस रॉड्स. इन सेम एप्लीकेशन अगर आप सॉलिड रॉड को न्यूक्लियर इंडस्ट्री में लेके जाओगे वेयर देयर इज ए हाई रेडिएशन एनवायरनमेंट, this will act as a like a bullet for you. The radiation will penetrate through the solid sphere ओके. because there is no shielding in it. So it has to be designed hollow. It is a big difference in understanding of his own knowledge, which is conflicting his own insights. So that's what there is a dedicated training required from all the professionals who are working in conventional industry टू न्यूक्लियर. to nuclear. So this transition requires a specific training. For that, you need to have a training infrastructure available, which is not available, at least for the public domain. We don't have anything, any research reactor or something where you can train your private companies to go there. राइट. Public, we have, but then it's not that easy. Secondly, to motivate more people to join. As I said in the beginning, no, we have this people looking for nuclear engineer, nuclear scientists to become. I mean, if they want to, and if I have to see how does nuclear look like, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा देखने? And I'm claiming that again, how many people who are even working in the nuclear industry currently have seen the blue operating reactor? When reactor operates, there ठीक is है. a blue light called Cherenkov radiations. How many of them have seen it? If you find the answer, you will be surprised. Not many. So, if we really want to motivate people, we need them to see, watch, and then we have to plan a structure way forward. The courses to be introduced in schools, that's where the foundation builds, that's where the interest builds. सो अभी के करंट एजुकेशन पॉलिसी में आप कहीं देख रहे हो अभी तो कहीं पे भी नहीं है. कोई भी नहीं है, नहीं है. एज को, कोई भी क्लास को न्यूक्लियर के बारे में आई कुछ थिंक सिर्फ एक कुछ पढ़ाते हैं? एक टर्म आती है, एक या दो टर्म या एक दो पैराग्राफ विच इज देयर इन क्लास 12. बाइंडिंग एनर्जी वगैरह बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बट न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फ्यूजन रिएक्टर, फ्यूजन टेक्नोलॉजी, आई थिंक एक पैराग्राफ या दो, और इससे ज्यादा तो कुछ डिटेल में नहीं है. कौन सी कंट्री इस पे बहुत ज़्यादा बुलिश है और पढ़ाती है अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को? बहुत सारे कंट्रीज हैं. यूरोप में इट्स ऑल देयर, यूएस में इट्स ऑल देयर, चाइना में इट्स ऑल देयर, तो साउथ हम कोरिया में बाकी इट्स कॉपी ऑल करते थे, देयर. ये कॉपी क्यों नहीं करते? हम अच्छी चीजें कभी कॉपी नहीं करते ना. हम कॉपी करने में फेल हुए. कितनी अच्छी बात है, अच्छी चीज़ कॉपी नहीं करते हम लोग। हम अच्छी चीज कभी नहीं कॉपी नहीं करते. यू सी, आप अब्रॉड जाते हैं, आप कूड़ा नहीं फेंकते हैं. यहाँ पे आते हैं बिंदास गाड़ी से फेंकते हैं. सेम चीज है. That's something we need to improve. So we need to put a बट क्योंकि proper. इंडियन जो जनता है, पब्लिक है, भारतीय लोग हैं, मेरे को लगता है वो बहुत क्यूरियस हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि गूगल पे वो सर्च तो कर रहे हैं, हाँ, बट आगे नेक्स्ट लेवल पे उनको कोई मटेरियल नहीं मिलेगा that's तो वो what. क्या करेंगे? That's what. क्योंकि अभी जो एक पूरा ये जो एंटरप्रेन्योरियल जो एक Yes. वेव आया कंट्री में, वो इसी वजह से आया क्योंकि उसको लोगों को उसमें थोड़ा Curiosity. थ्रिल मिला, क्यूरियोसिटी मिला और करा उन लोगों ने। तो आज एक मिनिस्टर अगर ये बोलते हैं कि आप लोग सिर्फ ऐप बनाते हो या डिलीवरी ऐप बना रहे हो, सो एक तरीके से उसमें पॉजिटिव ये है कि चलो कुछ बना रहे हैं,
तो अगर आपने न्यूक्लियर दिखाया या एरोस्पेस दिखाया तो शायद वहां भी बनाए, यस, तो दिखाओ तो, एग्जैक्टली। स्पेस सेलिब्रेट तो में करो। बना रहे हैं ना अभी इतने सारे लोग, जैसे ही स्पेस उन्होंने ओपन किया, दे आर डूइंग इट। Correct. एंड आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स। आई एम रिसीविंग अ लॉट ऑफ कॉल्स from young people who are studying or working in nuclear industry in abroad. ओके, Okay, Indians, ओके, they want to come back to India to start their own startup in nuclear. मोहन भार्गव, स्वदेश। हाँ, so they are asking me कि क्या है, कैसे है, and I show them the reality, like अभी नहीं है। In fact, if you notice, IONS के अलावा कोई भी ऐसा न्यूक्लियर स्टार्टअप है ही नहीं जिसने न्यूक्लियर बोल के MCA में रजिस्टर कराया हो। किसी को रिस्क लेना ही नहीं है। सबको ये लगता है कल को गवर्नमेंट आएगी बंद कर देगी, एंड आई एम लाइक बंद कर देगी तो बंद ही तो करेगी ना। वी आर नॉट डूइंग समथिंग अगेंस्ट द व्हाट इज नोन। सो देयर आर थिंग्स वेयर पीपल वांट टू कम इन, बट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल हाउ टू डू दिस। People are not very much, let's say, industry is very much not well prepared or knowledgeable enough to understand how to take care. Give you another example before we come on this training part. बहुत सारी नई न्यूक्लियर जो नई इंडस्ट्रीज न्यूक्लियर में एंटर कर रही हैं, उनको अभी भी ऐसा लगता है कि ये हाइड्रोजन की तरह है या सोलर की तरह है। हम बाहर जाएंगे, वहां से सामान खरीदेंगे, हमारे यहाँ पे लगाएंगे, एंड देन ये हाइड्रोजन, ये न्यूक्लियर, दिस एंड दैट। They forget the part nuclear is a very well regulated industry, and nuclear has a culture. It culture means like culture, वो संस्कृति and सभ्यता, it's there. Nuclear industry has its own culture of safety. It has its own culture of safeguards and security protocols which you need to follow. ऐसा नहीं है कि अरे वो वहाँ ठीक है या no, you can't bypass. It's a highly regulated industry. No one can just like that get it. So this lack of understanding and knowledge is missing from the people. तो वो एक और भी बड़ा चैलेंज है। और बट दैट इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु वांट्स course. टू एनकैश दैट कि न्यूक्लियर education as an industry can become a big thing, right? Exactly. So that is where the second point is coming, that you need to have a setup where you can actually train the current workforce who will become the managers and leaders after 20 years. And you have to invest in schools because they will become the workforce after 20 years. You see, like this is a transition. इनफैक्ट आपको भी 2030 में चाहिए होगा तो अभी से ट्रेन करना चालू करना We have already started. Okay. We have started on our end. So the part 1 of IYNS which you just mentioned. That's what it's doing. हमने 2015 से पहले एजुकेट करना शुरू किया, and you won't believe those young kids जो like 5-6 साल पहले Right. हमसे interact किए न्यूक्लियर, they are now choosing nuclear courses. Right. I have recently met a guy जिसने अभी 12th खत्म किया है, and he want to do his education in nuclear waste management specifically. And he asked me, नीश का नीश है ना ये? niche ka niche hai. And he asked me to mentor him and stuff. Nice. And we are mentoring him. There is another guy who is now very famous on social media as a nuclear advocate. His background is physics, but he learned so much about nuclear technology that he's writing, talking, speaking, and curating all those advocacy thing for nuclear. He want to go ahead with nuclear engineering now. These are people who got the flow of what we did in terms of awareness and advocacy. Correct. But again, we are talking about countable numbers. Countable. This has to be a movement, a very well structured program in education policy at both school, university, and higher research level. In fact, there's one more example which I recently got to know. There are people who are working in highly niche fusion technologies area. Nobody was aware of them. I myself got to know recently last week that we are having this, but at a higher policy level, nobody knows that who they are they doing something about it. So these are few things which are challenge, and this existing culture need to be replaced by this nuclear safety culture. Right. And when I say nuclear safety culture, it's not only about safety. It's about the culture of communication. It's about culture of interdependencies and about taking responsibilities and care, which is like missing in most of the senses.